हेलो फ्रेंड्स, द क्रैकर्स में आपका स्वागत है। आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के नंबर सिस्टम का टॉपिक डिस्कस करेंगे। दिस टॉपिक इज़ वेरी यूज़फुल फॉर एनी एग्ज़ाम बिकॉज नंबर सिस्टम is a very important topic in a digital communication and digital in electronics. So we start number system. In number system, we will discuss conversion, complement and arithmetic operations. In a conversion, data represent we sign magnitude, first complement and second complement we will discuss in this lecture. In conversion, we know that conversions are basically binary conversion is different digit like 0 and 1. Octal is called 0, 1, 2, 3, 4, 5 up to 7. Decimal conversion is 0, 1, 2, 3 up to 9. Hexadecimal is written as a 0, 1, 2 up to 9, and then we write not a 10 but we write A B C D E. We write A B C D E F. Then fourth conversion, in fourth conversion we write 0, 1, 2, 3 and 6 conversion we write 0, 1 to 5. 12 conversion we write 0, 1 to up to 9 and 10, B, A and B, because we don't write 10 and 11 in the 12 conversion. Let's we start how to convert a decimal, any decimal integer part in a fraction with base of r. So first of all we take one example, 19.125 base 10 to convert into binary digit. So how to convert a binary digit? Let's we start. First of all, take a decimal point before value, means 90. Take a 90 as a separate part and divide this value, यानी कि 19 को जो हमको कन्वर्ट करना है उससे डिवाइड करते जाना है। तो 19 को हमने पहले बेस 2 से डिवाइड किया, 9 2 ज़ा 80, तो हमको मिला फर्स्ट 1 एज अ कैरी। फिर 9 को 2 से डिवाइड किया, 4 2 ज़ा 8, तो हमको मिला फर्स्ट एज अ कैरी। फिर 2 to 4 तो 0 एज अ कैरी। फिर 1 to 2 तो 0 एज अ कैरी, एंड 0 2 यानी कि 1 एज अ कैरी। फिर इसको लिखने की टेक्निक है कि हमें नीचे से ऊपर तक लिखने का, ऊपर से नीचे के तक नहीं लिखने का, नीचे से ऊपर तक लिखने का। तो फर्स्ट डिजिट 1 0 0 1 1 ऐसी तरह से लिखने का है। और पॉइंट के पीछे का हमें बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए राइट एज अ मल्टीप्लाई विथ दिस डिजिट, जो हमें जिसमें कन्वर्ट करना है उसके द्वारा हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट वी मल्टीप्लाई 0.125 इंटू 2, देन वी गेट्स 0.25. In 0.25 we take a 0 before a 0 into 0.25 before a point we get as a carry, means 0 as a carry, because before a 0.25 we get a 0, so 0 as a carry. Next we take a 0.25 in the next step and we multiply with 2, then we get 0.5. In the 0.5 we also get 0 as a carry, because 0.5 we before the 0.5 we get a 0, and then third step
multiply 0.5 into 2 means 1. If 1 is get, then this process end, and we write in the sequence from like 0 0 1, so that we get 1 1 0 and 0 0 1. This is the conversion, decimal to binary conversion. Next is the example how to convert a decimal into octal number. So first of all, same pattern we follow here for octal number. जो हमने इस बाइनरी नंबर में यूज़ किया वो सेम पैटर्न हमें ऑक्टल नंबर के लिए भी यूज़ करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिवाइड 27 बाय 8. तो 8 3 जा 24, वी गेट अ 3 एज अ कैरी. देन 0 8 यानी कि 3 एज अ कैरी. फिर राइट बॉटम टू अपवर्ड डायरेक्शन, सो वी गेट 27. 10 base we get 33, 8 as a octal number. Then this part after the point part we also same pattern, just like we take in a बाइनरी नंबर कि हमें भी उस बाइनरी नंबर में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ हमको कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर में. तो हम इसको ऑक्टल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलता है पॉइंट, यानी 0.625 से हम 8 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 5 मिलता है. तो ये 5 हमें मिल गया. तो इसको इसके पीछे 33.5 ये हमारा आंसर हो गया ऑक्टल डिजिट का. तो बाइनरी डिजिट हमारी हो गई, ऑक्टल डिजिट हो गई. अब हम करते हैं हेक्साडेसिमल डिजिट. तो इन हेक्साडेसिमल 2765 सेम वैल्यू एंड इट्स कन्वर्ट इनटू 16 यानी कि हेक्साडेसिमल. तो सेम पैटर्न वी फॉलो, जस्ट लाइक 27 वी डिवाइड 27 बाई 60. तो 61 60, तो वी गेट 12. 12 means nothing but A, B, C, D, 10, 11, 12, 30. तो B means nothing but a 12 because 60 and 12, 60 and 11 we get a 27. तो B as a carry. Next we divide 1 by 60. तो we also get a 1 as a carry. तो written in the bottom to top. So our first part is finished for 27. Then next part is how to deal with 6.625. The same pattern we follow. We multiply 0.625 with 60. Then we get a 10. So in a hexadecimal we not write 10, but we write 10 as a A. So A we write. So in the conversion we get 1 B point A is our answer for this question in hexadecimal. The same pattern we get a value 1 to 7.5 decimal to convert a hexadecimal. First of all we get 1 to 7 before the point. So 1 to 7 divided by 16 because we converted into the hexadecimal number, so we divide 16. So we get a 7 6 7 and we get a F as a remainder. So
take as a carry f. Then next divide is 7 by 60. We also 7 as a carry. So our first part get 7f because we write bottom to top. Then next our second part is a 0.5. So multiply 0.5 with 60, we get a 8 as our answer. So our final answer is the combine both. So 7f from here and 8 from here in between point. So we get this answer. The next is the 27 decimal to convert a फोर्थ डिजिट. तो फोर्थ हमने जो डेसिमल में, ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल, बाइनरी में जैसे जो पैटर्न यूज़ किया वही यहीं फोर में भी यूज़ करना है. तो फर्स्ट इसमें पॉइंट के पीछे का कुछ नहीं है, तो सिर्फ पॉइंट के आगे का है. तो सिर्फ पहला पार्ट यानी कि इसको डिवाइड करने की मेथड यूज़ करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिवाइड 27 by 4, we get 6 for the 2 4 and 3 as a carry. Next divide 6 as a 4, then we get 2 as a carry. Then 1 is not divisible, then 1 is a carry. Then right bottom to top, then we get a 1 to 4 is our answer. तो ये तो हो गए सारे डेसिमल टू एनी अदर कन्वर्जन. देन नेक्स्ट पार्ट इज अदर टू डेसिमल, यानी कि हाँ अदर इक्वेशन हो उसमें से डेसिमल में कैसे हम कन्वर्ट करें. तो उसके लिए सिंपल है अदर टू डेसिमल में कि अगर पॉइंट के आगे का हो तो हमें फर्स्ट वाला पार्ट है वो जो जिससे कन्वर्जन करना है उसका बेस और उसकी घात में 0, फिर उसके बाद उसका एक बेस बढ़ा देने का, फिर r² हो जाएगा. और पॉइंट के पीछे में r-1 r-2 होगा, तो फिर हम को डेसिमल में मिल जाएगा. वन एग्जांपल लेकर समझते हैं तो बढ़िया होगा. तो लेट्स वन वी टेक वन एग्जांपल हियर. इन दिस वी टेक अ 10111.11 by binary to decimal number. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 1 1 because 1 into 2 raised 1 into 2 raised to 0 2 raised to 0 यानी कि 1, यानी कि 1 into 1 वी गेट 1. फिर 1 into 2 raised to 1 दिस स्टेप. फिर दिस नेक्स्ट थर्ड 1 into 2 raised to 3 2 raised to 2. Then we get this step. Multiply with 0 with any 2 raised to, we get a 0. And then last one 2 raised to 4 into 1, we get 60 into 1. And after a point same pattern we follow here. 1 into 2 raised to -1 and 1 into 2 raised to -2, यानी कि हमें पॉइंट के आगे का 1 इंटू जो ये वैल्यू है वो लेने की है और उसकी मल्टीप्लाई करने का है जो ये बेस है उससे, उसकी घाट को बढ़ा के जाने का और पॉइंट के पीछे उसकी घाट को घटा के जाने का है. -1 -2 -3 ऐसे पॉइंट के पीछे ऐसा होगा. और पॉइंट के आगे वाले के लिए 1 0 1 2 3 ऐसे बढ़ता हुआ जाएगा. तो हमको फाइनल आंसर मिल जाएगा 23.75 डेसिमल. This is a 2 example, same pattern here follow कि how to convert octal number to decimal number and hexadecimal to decimal number. These 2 example is your homework. Please do it and check your answer if it matches it or not.
Next is convert a octal number to binary. Octal number, we know octal number 0, 1, 2, 3, 4 up to 7. Then convert 0, 1, 2 into this form 0, 0, 0, 0, 0, 1, this form up to 1, 1, 1, 7, ये 0 ये 1 up to 7. Okay, so how to convert this octal number into this binary number? First of all, let take 5. First we take 2, write in the decimal form, means 2 यानी कि हमें 0 यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. देन वी 2 यानी कि 0, 1, 0, 7 यानी कि लास्ट डिजिट 1, 1, 1 वी गेट 5 यानी कि 1, 0, 1, 1, 0, 1, 3, which means 0, 1, 1 we get, and 6, 1, 1, 1, 0 we get. This is very simple. Convert octal to decimal, octal to binary. Then next, same but is reverse. How to convert binary to octal? In the binary to octal, we joined all the three pair. First of all 3 pair, then next 3 pair, then next 3 pair, but here only 2 digit, so we put a 0 extra, so get he convert 3 pair and then combine 0, 1, 1, 3, 3, 1 we get as an answer. Then next topic, hexadecimal to binary. As same like we convert octal to binary, same pattern we here follow to hexadecimal to binary, but here we use 4 digit. In an octal number we use 3 digit, but here hexadecimal we use 4 digit. All the pattern same as a octal number. First of all, let's take in the A we get 1, 0, 1, 0, B, D we 1, 1, 0, 1, C 1, 1, 0, 0. How it's no K is 1, 1, 0, as we our 0, 0 is 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5 up to. तो इसको लिखने की एक ट्रिक है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट 0, फिर 1, पहली डिजिट में 0, 1, 0, 1 ऐसे बढ़ता जाए, फिर 2 0 होगा, 2 1 होगा, 2 0 होगा ऐसे, फिर 4 0 होगा, फिर 4 1 होगा, फिर 8 0 होगा, 8 1 होगा, तो हमें लास्ट में F में 1 1 1 1 मिल जाएगा. तो इस तरह से अभी हम लिख सकते हैं इसको. फिर ये बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, तो इट्स जस्ट ऑपोजिट टू हेक्साडेसिमल. in binary to hexadecimal we collect pair of 4 4, then same pattern follow here. This is the most important how to convert hexadecimal to binary. First of all we convert hexadecimal into binary
First of all, we convert hexadecimal to binary, then convert binary into octal. Then next topic is arithmetic operation in the number system is the very most important arithmetic sum. In this we binary system add subtraction અને multiplication, octal system add subtraction multiplication, hexadecimal માં add subtraction and multiplication, and any R base માં add subtraction and multiplication we discuss here. First of all, binary addition. We know that in the binary addition 0 0 binary addition 0 0, so we get 0 as a output, 0 1 we get 1 as a output, 1 1 we get a 0 as a output and 1 as a carry. In 1 1 1 1 as a output and 1 as a carry is very most important, these two. Let's suppose we take one example of it. Is the first and is the second digit, and then we take a addition of it. So how to addition of it? First of all, 1 1, so we get 0 and 1 as a carry, then 0 1 0 1, then 0 1 we get addition 1, 1 1 addition 0 and 1 as a carry, 1 1 0 1 as a carry, 1 as a carry, then 1 1 1, so 1 and 1 as a carry. This is the answer. How to addition? The same here for the binary subtraction. In the subtraction we get, in the subtraction if 0, in the subtraction 0 minus 0, so we get 0, 0 minus 1 we get 1, 1 minus 0 we get 1, and 1 minus 1 we get a 0, but 0 minus 1 1, but we get a 1 as a carry. This is a very important for binary subtraction. Let's take one example. These two, please binary subtraction. So we know 1 minus 0 0, but 1 is the carry. 1 1 1, 1 minus 1 0, 0 minus 1 0, and 1 is the carry. 1 minus 1 1 minus 0 1, 1 minus 1 1, and 1 1 minus 1 0, 1 minus 1 0, we get a final answer here. Same pattern we get binary multiplication. How to binary multiplication? In the binary multiplication, first of all take these two digit, and first of all we take this digit and multiply this digit, this value, all binary number of this. So first we multiply with 1, फिर 0, फिर 1, फिर 1. How? Let's we show. First of all 1 0 1 0, we multiply with this one, we get this. Well, putting same multiply with 0, we 0 multiplication we get all the digits 0, but move one step toward the left direction, then next multiply with 1, then we get 1 0 1 0. Other next step multiply with 1, we get 1 0 1 0. In all the step we move one step toward the left direction, then all four step are sum, then 1 is 1, 1 0 1, 0 0 1 means 1, 1 1 1 1, and 1 is the 1, and 1 is the carry. 1 1 0 1 is the carry, 1 1 0 1 is the carry, 1 1 0 1 is the
carry. So final answer, we multiply both these two. Then next question is multiply, same pattern here. How to multiplication these four, first digit, then second digit, third digit and fourth digit, and take a left direction one step, then finally we get this answer. In the octal number, how to find octal number addition here. So in the octal number 1 and 1 we know 2, 1 and 2 we know we get 3, 1 and 6 we get 7, 1 and 7 we get 8, 7 and 1 we get 8, which means 8 divided by 8, 1, 8, 0, 0, 1 we get 8, 9, 9 is 9, 7 plus 2, 7 plus 2, 9. How in the 9 we get 1, 1, how divide 8, first 1 as a carry, then again divide 8, 1 as a carry, though we get 1, 1, because is a octal system, so we write up to 7. Then next step 8, 9, 10, 11 we same pattern follow, divide 7 plus 3, 10, to 10 divided by 8 we get 2 as a carry, and then again divided by 8 we get 1 as a carry. So upward direction we get 1 and 2 here, show it. Then next we take a addition example here. These two digit addition, first of all 3 plus 2, 5, 7 plus 6, 6 plus 7, 13, so 13 divided by 8, 1, 8, 5 as a carry, and then again 1, 8 divide 1, then 1 we get, so 1 and 5, to put a 5 and 1 is a carry, so we get 1 is a carry. 6 plus 4, 10, and 1, 11, 11 means, which means divided 1, 8, 3 as a carry, and again 1 as a carry, so 3 and 1 here as a carry, so 5 plus 2, 7 plus 8, 8, 7 plus 1, 8 को 1 0 से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 0 हो जाएगा उसमें 8 में. फिर है ऑक्टल सब्ट्रैक्शन. इन द ऑक्टल सब्ट्रैक्शन, हाउ टू ऑक्टल सब्ट्रैक्शन, लेट्स शो. In the octal subtraction, these two value subtract it. First of all 4 minus 2 we get 2, 5 minus 5 we get 0, 6 minus 6 we get 3, 7 minus 2 we get 5. This is very easy to subtract, but here, so here is the problem created. These two value, please subtract it. First of all we subtract 4 minus 3 we get 1, no problem. फिर 2 minus 5, problem is created here. 2 minus 5 we don't subtract because upper value is greater than lower value, so that we take a carry from 3. How much carry we get? It's octal number, so we get 8 as a carry, and add this 8 into this number, which means 8 plus 2 we get a 10, and then subtract from this 10 minus 5 we get 5. ओके, फिर यानी कि फिर दोबारा फिर से एक बार 2 minus 5 we don't subtract it, so take other, take 8
from here and add these 8 to, then we get a 10, and subtract 10 from 5, we get a 5. In the octal subtract, here we use octal subtract, so we get 8 from next step. If we use hexadecimal subtraction, so we use 16 as a parity. If we use binary, then we use 2 as a parity. Okay. Then again problem is created here. Again here we give 8, so here is a 2, and again 2 minus 6 occur, don't occur, so we get carry parity here, and here is a 6 value, and 8 come from here, and subtract, and addition of 8 plus 2 10, and 10 minus 6 4, and 6 minus 1 5, so we get final answer 5451. In the hexadecimal, as we earlier, for a octal number, same pattern, 1 1 1 2 3 8 9 9 1 9 10, but we don't write 10 a, same a plus a, which means 20, so we divide 20 by 16, and 1 we get 4 as a carry, then again 1 as a carry. Same pattern, 15 plus 15 30, so we divide 30 by 16, so 14, which means e as a carry, then 1 as a carry. So how we use, we take one example, sum of the two hexadecimal number. These two number, we perform addition, which means 9 plus 3 12, 12 which means C, because it's a hexadecimal number, to put C. 8 plus 4 12, to put C here. 6 plus 5 11, to put B here. 7 plus 5 12, to put C here, so we get CBCC. Next example is, in this example we also perform addition. In the addition, 6 plus 9, which means 15, but in is hexadecimal, so we write F here. 7 plus 8 also 15, we write F here. 6 plus 4 10, so we write 8 here. 2 plus 5 7. This is the same pattern you do, but here problem when subtraction is occur. So let's suppose perform these two subtraction. So first of all, 4 minus 3 we get a 1 as answer. फिर 5 minus 7, upper value is lower than lower value. So same pattern as we follow in the octal number, we same take this and put this in this value, 16 in this carry parity. So we reduce here by 1 5 and add this into this value, so we get 21, and subtract 21 by 7, we get E, which means 14. हमने जो ऑक्टल नंबर में यूज़ किया था कि अगर ऊपर की संख्या नीचे की संख्या से छोटी हो तो हम उसके बाजू वाले से उसके जैसा ही उसमें से एक कम कर देना और उसके पैरिटी लेने की है. अगर ऑक्टल नंबर हो तो 8 नंबर की पैरिटी लेने की, हेक्साडेसिमल नंबर हो तो 16 नंबर की पैरिटी लेने की, और बाइनरी नंबर हो तो 2 नंबर की पैरिटी लेने की और उसमें ऐड करने का और फिर सब्ट्रैक्ट करने का. फिर यहाँ होता है 5 और 5 माइनस ऑल्सो वी टेक 1 पैरिटी फ्रॉम हियर 60
plus 5 21 and 6 minus we get 50 यानी कि f, and then 8 minus 2 6. So this is very important in the subtraction. Then next is the complement. This is a very important point, complement, because every exam complement question are occur. In the complement there are two types of complement: r complement and r minus 1 complements. In the binary, second two's complement and first one's complement. In decimal, 10's complement and 1 minus 10 minus 1, which means 9's complements. In octal, 8 complement and 7 complement. In the hexadecimal, 16 complement and f complement. F which means 50 complement, but in hexadecimal we write 15 as a f. So how? First of all, we take a r minus 1 complement of binary, decimal, octal and hexadecimal. Then we perform r complement of binary, decimal, octal and hexadecimal number. Here we perform first complement of binary number. तो अगर आपको फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करना है तो ये हमारी इक्वेशन है, इसको फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में परफॉर्म करना का है. तो इसको अगर ये फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट है तो उसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट का सबसे मैक्सिमम नंबर होता है वो 1 1 1 1 होता है. बट ये 8 नंबर का है तो जितना 1 हो उतना 1 लिखने का और उसके बाद उसमें से कॉम्प्लीमेंट करने का. Which means first we write all sequence of 1 maximum number and then subtract it from question, so we get final answer, which means हमको ये हमारा इसको फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी reduce this by all the maximum number 1 1 1, then we get 1 minus 0, we get 1 1 1, we get 0, 1 minus 0, we get 1, 1 minus 0, we get 1, 1 minus 1, we get 0, 1 minus 0, 1 minus 1, we get 0 is the final answer our here. So first complement is clear. Same pattern we use for a seventh complement. In the seventh complement biggest number is 7773 and find value 26737 complement. तो 7773 subtract 2673, then 7 minus 3 4, 7 minus 7 0, 7 minus 6 1 and 7 minus 2 1. तो we get answer, final answer. सेम पैटर्न वी यूज़ फॉर 9 कॉम्प्लीमेंट. दिस वैल्यू का हमें 9 कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो हमको पहले सबसे बड़ी संख्या 999 उसमें से दिस वैल्यू को बात करने का है, तो फिर हमको 7310 फाइनल हमारा आंसर मिलेगा. सेम पैटर्न हम एफ़ कॉम्प्लीमेंट के यूज़ करें कि 3579 का एफ़ कॉम्प्लीमेंट क्या है. तो हमें पता है कि एफ़ कॉम्प्लीमेंट का सबसे बड़ा मैक्सिमम नंबर है वो एफ है. उसमें से जो जिसका पूछा है वो बात उसको उसमें से रिड्यूस करने का, फिर हमारा फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा. एफ माइनस 9 हमको 6 मिलेगा बिकॉज एफ इज़ नथिंग बट 50 इन द हेक्साडेसिमल नंबर. तो वी गेट अ फाइनल आंसर. सेम पैटर्न. सो ऑल r minus 1 complement is completed. Then next our is r's complement. R complement is nothing but r minus 1 complement and add 1 to last digit, which means हमने r minus 1 complement फाइंड कर लिया. उसमें से जो हमको मिला उसमें लास्ट डिजिट में +1 ऐड कर दो तो हमें r complement मिलेगा. तो देखते हैं कैसे मिलेगा. बट इन द second complement there are two pattern. First of all r minus 1
हमको मिल गया, उसमें एक ऐड कर दो तो हमें मिलेगा। और दूसरी पैटर्न यहाँ पे है कि इस इक्वेशन है, ये बाइनरी डिजिट है, उसका हमें 2 कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो उसका 2 कॉम्प्लीमेंट के लिए हमको पहले 0 ऐसे ही, इसके पहले हमें ये पढ़ स्कैनिंग अप टू फर्स्ट वन एंड आफ्टर दैट कॉम्प्लीमेंट, कि इसको हमें स्कैन करना है यहाँ से लेफ़्ट साइड से। तो तब तक स्कैन करना है जब तक फर्स्ट वन ना आ जाए। तो हमें स्कैन करना है और पुट वैल्यू सेम रखने की है जब तक कि फर्स्ट वैल्यू ना आ जाए। तो 0 का 0, 1 नहीं आया, 1 आ गया तो 1 का 1 होगा। और फिर 1 के बाद का जो सारे हैं उसको हमें कॉम्प्लीमेंट करते जाना है, यानी कि 0 होगा तो 1, 1 यहाँ होगा यानी कि 0। तो 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0। तो वी गेट 2's complement. This is the first method and this is the second method. In the second method we first find r minus 1, यानी कि r first complement, then put 1 to get a final answer 2's complement. If the 8's complement, find 2670 का 8's complement। तो हमको पता है 8's complement है, तो हमें पहले 7 कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है और उसमें फिर 1 ऐड करने का है। तो 7 कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हमको सबसे बड़ा बस 7 में से 2670 रिड्यूस करना है। तो हमें मिलेगा 5107। ये 7 कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड कर दिया और 7 कॉम्प्लीमेंट उसमें हमें फर्स्ट ऐड करने का है। तो फर्स्ट हम उसमें ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा 8's कॉम्प्लीमेंट इज द आवर फाइनल आंसर। Then next is the nothing but the 10's complement. Same pattern here follow to find this value 10's complement. So first of all we 9's complement and then we add 1 to find the 10's complement. For 9 complement we reduce 9999 from this value and then add to get 10's complement. Same pattern we follow for a 16 complement. For 16 complement, first of all we find 15 complement. 15 complement is nothing but a f. So we reduce all f from this value from f. So we get 15 complement and then add 1. So we get 16 complement is our answer. So today's lecture we will completed all the details and multiplication, how to find it, subtraction, addition, multiplication. तो अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। थैंक यू।